from Civil Department. So now in this video, we talk about our road payments. So we need to construct a road. So before constructing it, we need to decide what kind of material which we'll using it and what kind of road payment which we need to make. So road payment is basically defined as a structure constructed of one or more layers. So it will be consisting of one or more layer. It could be a two or it could be a three layers of different materials like earth, gravel, crushed rock, cement, bitumen, etc. So depending on the layers and depending on the design characteristics according to IRC, we need to change our material, change our courses, and differentiate our layers. So they all materials which is used properly and all the layer which is laid down has to be properly treated and compacted to carry the traffic load smoothly and safely with the minimum operation cost. So whenever you are making a road, so in that road, whatever kind of material which you are using it, either it is a cement, either it is a bitumen, aggregate or a soil, they need to be treated before it is used or treated after it is laid down. So then after treating it, it need to be compacted so that it will be able to bear that or resist that load or any kind of weathering agencies or any wheel stresses, and your traffic will be moving on smoothly and safely. So your design parameters also, like your gradient, your side distances, these all criteria like including your geometric designs, camber, road drainage path, super elevation, these all need to be considered before making a road payment. So whenever it is laid down, whenever a road is laid down properly from a base course, means from a stabilization of a soil till the top bearing cost, so that final product has to be of a minimum cost, means operational cost आपकी कम हो, then आपकी जो efficiency हो, means आपकी usefulness to your passenger or to public, that should be better. So payment says a highway payment is a structure consisting of superimposed layers of processed materials. Superimposed layers of processed material means any kind of material which we are using, it could be a processed material, means it need to be stabilized. Like I said, ki apni the soil hai, if that soil is not good enough, if the bearing capacity of that soil is not good enough, so that we need to stabilize our soil. आपको soil की bearing capacity को है वो increase करना पड़ेगा by any measure. Either you can use any kind of method for stabilization, ठीक है, whether you can use any kind of other material also for stabilize your soil. So that has to be there. It need to be treated properly. Above the natural soil subgrade, whose primary function is to distribute the applied V load to the subgrade. So basically जो subgrade के ऊपर जितनी भी layers आपकी आ रही हैं, starting from the veering course to the sub base course or a base course, उन layers का जो purpose है, the main motive or the main function of those layer, that has to be differentiating and distributing that whole load, whole V load which is acting on it to the subgrade. मेन जो व्हील लोड के ऊपर टॉप से जो लोड आ रहा है, जो व्हील का जो ट्रैफिक का एक कार का या ट्रक का किसी भी व्हीकल का जो लोड आ रहा है, जो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रही है, वो सबसे पहले बीयरिंग कोर्स के ऊपर आएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे वो बेस कोर्स के एग्रीगेट्स के पास या उसमें जो भी मेटल आपने यूज किए, देन टू द सब बेस इफ इट इज प्रेजेंट, देन एट लास्ट इट विल बी मूविंग टू द सबग्रेड. तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो उस लोड की रहेगी, दैट हैज टू बी सबग्रेड. तो सबग्रेड हैज टू बी स्टेबल इनफ और आपके जो सब्सिक्वेंट लेयर जो हैं, that has to be strong enough to resist that load, ताकि वो उनके लोड आने के कारण ब्रेक ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए. So the payment structure should be able to provide a surface of acceptable riding quality. तो जो आप पेमेंट सरफेस जो टॉप के ऊपर डाल रहे हो वेरिंग कोर्स, उसकी जो वेरियस कैपेबिलिटीज हैं, जो एबिलिटी है उसकी, that should provide a surface for of acceptable riding quality. राइडिंग क्वालिटी शुड बी एक्सेप्टेबल, मींस एक गुड राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए. ये नहीं काफी रफ स्ट्रक्चर है जैसे आप नॉर्मल देखते हो, काफी ज्यादा पॉट होल्स हैं या काफी ज्यादा आपके जो एग्रीगेट्स हैं वो इजीली कंपैक्टेड या एडेसिव नहीं है, कोहेसिव नहीं है एक साथ, ठीक है. सो दे आर लूजिंग पार्टिकल्स, so that should not be there. A smooth surface, smooth riding quality should be there. Adequate skid resistant, so whenever you are applying a brake, so that friction should be adequate, neither a more neither less, ठीक है. अगर ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो आपकी स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी व्हीकल्स की, अगर ज्यादा रफ कर दोगे तो आपके वियर एंड टियर ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा व्हीकल्स का. ऑल्दो दे विल स्टॉप अर्ली, बट देयर वियर एंड टियर, देयर ऑपरेशन कॉस्ट विल बी हाई, ठीक है. तो वियर एंड टियर को ध्यान में रख के व्हीकल का एज कम्पेयर टू देयर सेफ्टी, दैट वी नीड टू डिजाइन.
and favorable light reflection characteristics. So light correction characteristics has to be there. तो जो भी आपकी जो lights पड़ रही हैं उसके whether in the night or in a summer or in a night day timing, so that light refraction has to be minimal, ज़्यादा reflect ना हो, ठीक है? अगर हो तो कितनी जगह पे कितनी permissible है, that has to be seen. Then and low noise pollution भी काफी कम होना चाहिए, means they will not be they should not reflect that noise which is coming out of that vehicles, ठीक है? जो आपके जो व्हीकल में जो आपके पास सॉरी जो आपके रोड्स के पास जो एग्रीगेट आपने डाले हुए हैं यूज किए हैं, that should absorb that noises, that should absorb that shocks also, so that आपका जो noise pollution है वो भी कम रहे. That should not reflecting qualities नहीं होनी चाहिए आपके aggregates के ऊपर, neither to the shocks, neither to the noise, ठीक है? So the more they will be adopting or absorbing those pollutions, like आपका जो noise से लेके आपके shocks हो गए, so your comfort will be increase, आपका जो comfort रहेगा traveling का वो increase हो जाएगा passenger का. Then the ultimate aim is to ensure that the transmitted, तो जो अल्टीमेट एम है पेमेंट को बनाने का, दैट एम हैज टू बी स्ट्रेसेस ड्यू टू वी लोड आर सफिशिएंटली रिड्यूस्ड. तो जो भी स्ट्रेसेस जो आ रही हैं वी लोड की वो रिड्यूस हो जाएं, सो दैट दे विल बी नॉट एक्सीडिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सबग्रेड. तो लाइक आई सेड कि अगर आपकी सबग्रेड की क्वालिटीज जो स्ट्रेंथ है सपोज वो आपकी 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सो दैट उस स्ट्रेंथ से उस बेयरिंग कैपेसिटी वो ज्यादा इंक्रीज ना करे, सो दैट बेयरिंग कैपेसिटी जितनी भी सबग्रेड की है उससे ज्यादा स्ट्रेसेस उसके ऊपर ना आए. इसी के बेसिस पे आप उसको डिजाइन करते हो, ठीक है? उसकी जो पेमेंट की वेरियस थिकनेस रहेगी हर एक लेयर की, दैट विल बी डिसाइडेड बेसिक ऑन द सबग्रेड की क्वालिटी एंड देन क्यूमुलेटिंग फैक्टर ट्रैफिक लोड, तो ट्रैफिक कितना आ रहा है और सबग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग IRC 37 में इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपको कोड में मिल जाएगा. यू विल बी सीइंग what are the various thicknesses of various layer which we need to construct. Then the second aim is two types of payment are generally recognized as serving the purpose. So basically आप two types की payments design करते हो, ठीक है? Flexible and rigid payment. So now these flexible and rigid payments are depending upon their material use and depending on the reaction of their stressing. तो means stresses जो भी उसके ऊपर आ रही हैं उनका reaction उनके ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है? Depending on that उनको भी इसके ऊपर denote किया हुआ है. So before moving to this flexible and rigid payment, let me just discuss about what are the requirements of various good payment we should have. तो जो हम ideal payment जो हमारी होनी चाहिए तो उसकी क्या क्या requirements what we need to find और क्या क्या properties उसमें होनी चाहिए. So the first requirement, ideal requirement which we need, find which should be meeting out in a requirement in a payment, that has to be sufficient thickness to distribute the wheel load stresses to a safe value on the subgrade soil. Means like I said, I've given you an example. If आपकी जो subgrade की layer है, जो bottom layer है जहाँ पे soil है, so that soil की जो bearing capacity है उस bearing capacity से उसके ऊपर load सबसे उसके ऊपर नहीं आना चाहिए. Means if that bearing capacity of that soil is approximately suppose 50 kilonewton per mm square, ठीक है? So after 50 kilonewton per mm square के ज्यादा उसके ऊपर load नहीं आना चाहिए. All the load which is coming above that 50 kilonewton load should be absorbed by the subsequent layer which is acting on the top of a subgrade. तो subgrade के ऊपर जितनी भी आपकी layers हैं, whether it is a sub base, whether it is a base course or a wearing course, so those all layers should absorb that maximum load. After that, the minimal load which is diverting to the subgrade, that should not exceed the 50 kilonewton for a assumption. Like I'm taking a hypothetical value for a 50 kilonewton per mm square. So mean that limit should not exceed whenever the load is coming to the subgrade. So structurally strong to withstand all type of stresses imposed on it. So your payment, including every year, that is a integral part of all routes, all layers. Either it is a base course, wearing course, subgrade, or soil subbase. So whatever these all layers should impact all the forces. जो भी उनके ऊपर impact आ रहा है, they should resist and withstand all the forces which is acting upon it. Whether it is due to the vehicle or whether it is due to the weather. या तो वो weather के कारण है या किसी भी वो like water के कारण है, like आपका जो capillary action है from the bottom उसके कारण stresses आ रही हैं या आपके vehicle के load के कारण stresses आ रही हैं. So depending on कोई भी stresses आ रही हैं, that should be resisted by your payment. Then adequate coefficient of friction to prevent skidding of vehicles. तो adequate coefficient होना चाहिए friction का
टू प्रिवेंटिंग स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ताकि आपके व्हीकल स्किड ना करें। तो एडिकेट होना चाहिए मींस ये भी नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ आप एक लाइक काइंड ऑफ अ ग्लास की फॉर्मेशन जैसा बना दोगे, आपके व्हीकल स्लिप करने स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन एक नहीं होगा, एक लिमिटिंग और एडिक्वेट फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपके व्हीकल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी फिगर आउट। जैसे आपकी क्ले के ऊपर आपका व्हीकल नहीं चल पाएगा, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, आपका व्हीकल वहीं पे ही स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली एडिक्वेट फ्रिक्शन हैज टू बी देयर, adequate coefficient of friction has to be there for moving of your vehicle, but it should be adequate, it should not exceed to a certain limit, ताकि आपकी skidding ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाए। Then is smooth surfaces to provide comfort to road users even at a high speed। ठीक है, तो एक स्मूथ एक सरफेस आपके व्हीकल्स को मिलना चाहिए, पैसेंजर्स को मिलना चाहिए, रोड यूजर्स को, even if they are moving at a very high speed, so they produce least noise from moving vehicle, तो noise ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो whereas this case is not recommended, this case is kind of neglected in a case of a concrete road। कंक्रीट रोड में आपको नॉइसेस एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल वेबल से ज्यादा आती हैं, बिकॉज कंक्रीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, दे काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट दैट स्ट्रेसेस एट अ सर्टेन लिमिट, वो एक लिमिटिंग अमाउंट तक स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करता है, इवन द नॉइसेस को, बट इट इज काइंड ऑफ ड्यूरेबल। Then is dust proof surface so that track safety is not impaired by reducing visibility। तो dust proof surface भी आपको होना चाहिए। तो means cleaning that needs to be that we need to see कि आपकी मेंटेनेंस अच्छे से होती रहे। तो डस्ट प्रूफ सरफेस एक होना चाहिए, तो आपकी जो विजिबिलिटी है, ठीक है, तो वो अच्छी रहे, रिफ्लेक्शन अच्छी रहे राइट्स की। सो देन इम्परवियस सरफेस सो दैट द सबग्रेड सॉइल इज वेल प्रोटेक्टेड। तो आपका जो सरफेस है दैट हैज टू बी वेल इम्परवियस, ताकि आपका जो वाटर है वो सबग्रेड तक ना जाए। ठीक है, इफ रेन वाटर और सरफेस वाटर, कोई भी वाटर आपका है सरफेस के ऊपर अगर आया, तो सो इट शुड नॉट अलाउ टू पेनिट्रेट फ्रॉम इट। तो आपकी जो पेमेंट है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, सो दैट वी नीड टू सी कि आपको वो इम्परवियस मटेरियल रहे, ताकि आपका पानी उसमें से फ्लो करके सबग्रेड तक ना पहुंचे। बिकॉज सबग्रेड तक अगर आपका इफ वाटर इज रीचिंग टू द सबग्रेड, सो योर सबग्रेड विल बी सेटल डाउन, इट विल स्टार्ट सेटलिंग आउट, और आपकी जो रोड का स्ट्रक्चर रहेगा वो फेल हो सकता है। Then is long design life with a low maintenance cost. So that is a kind of a ideal requirement which we see कि आपकी जो cost है that should be minimal enough, और आपको जो durability मिले, ठीक है, weathering से, और उसकी जो लाइफ रहे वो थोड़ी इंक्रीज रहे, ठीक है, लॉन्ग लाइफ रहे, with a low maintenance cost means ज्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े आपको टाइम टू टाइम। So these are the various requirements we have. So after the requirements, what we see, we will be discussing about the various types of payment now. So payments we have is two type of payment, like I already told you. The first is flexible and another one is a rigid payment. So in the first image you will see, so that that image says that is a flexible, that is a black road। आपकी जो flexible payment जो आपकी बिटमन की जो बनती है, उसको हम ब्लैक रोड्स बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक टॉप रोड्स भी बोलते हैं, रोड मेटल्स जिसमें आप यूज कर रहे हो, बिटमन जो आप यूज कर रहे हो। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, सो दीज आर द वेरियस लेयर व्हिच इज प्रेजेंट इन अ वेरियस टाइप ऑफ रोड। तो फर्स्ट आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, द बॉटम लेयर इज कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल फॉर्मेशन, दैट इज अ सॉइल। आपकी जो सॉइल है उसकी सबग्रेड है, सो दैट इज अ सबग्रेड लेयर प्रेजेंट इन द बोथ लेयर्स, दोनों में प्रेजेंट आपका, whether it is a rigid or whether it is a flexible payment। Then we have is our second course from the bottom, that is our base course आपका जो रहेगा। So that base course consists of a layer of sand, gravel और crust stone। तो ये दोनों layers आपकी present हो सकती हैं। It is, अब आपकी जो rigid payment है उसमें हम बाद में decide करते हैं। So firstly let me just discuss about the flexible payment। तो flexible payment, the bottom layer is a kind of a subgrade, that is our soil only। Second layer consists of a gravel, sand or crust stone, consists of mixture of these all aggregates and soil। Then third layer is a mixture of base course, आपके जो base course हैं, aggregates जो हैं, mixing with the asphalt, mixing with the bitumen, that makes your bitumen base course। So after the base course we have is a flexible payment जो आपका top का wearing course रहेगा, इसमें आपका seal coat डलेगा। So that we'll be discussing further in the next videos। So initially these are the various layer which is present in a flexible pavement। तो flexible pavement में आप bitumen use कर रहे हो, ठीक है, जो आपका bitumen और tar है वो आप use कर रहे हो उसको surface पे बनाने के लिए। Coming to your rigid payment में subgrade is same as compared to your as similar to your flexible payment। अब आपकी जो base course आपको दिख रहा है, so that it could be known as a base course, as a subgrade course, and it might sometimes emit it also। It is not always recommended to do it or to lay it down when your soil subgrade is a kind of a good strength, so then it is not that is not recommended always, so that is not mandatory always to make this surface।
So then afterwards, after the sub base or base core, or after immediately after subgrade, we need to apply a concrete road. So concrete may it could be also pre-casted and cast in situ. तो या तो आपका pre-casted means पहले से slabs बन रखी है इंडस्ट्री में, you just simply have to lay it down, और आपकी casting means आप उसको साइड पे ही कास्ट कर रहे हो. इसमें आपकी reinforcement डलेगी. If there is a reinforcement in there, so then it will be known as a reinforced cement concrete. If it is a plain cement, so then it will be a plain cement concrete. So like in this, that's how the final product will looks like. So that is a flexible payment structure, and that is a rigid payment. So now in this rigid payment, so this you will see there is a one one gaps or joints are present in it. So that joints are basically expansion joint which need to be present in a concrete road whenever you are making it, because concrete have a very temperature variation susceptibility. So they expand and contract with the temperature variation. So to allow that expansion and contraction in between the concrete surface, we need to provide a certain gap in it so that they will be susceptible and adopting that compressibility, adopting that incompressibility and compressibility both. So whenever they are contracting and expanding, so there is a certain margin which is left over, so that it is kind of, you have given a certain space so that वहाँ पे cracking not develop हो. So if you are not making any expansion joint in a bitumen in a concrete road, तो आपके cracks जो हैं वो develop होने start हो सकते हैं. So that to not allow that crack to happen, so we are making a small expansion joints in it. So we also need to fill these cracks also, because the surface has to be totally impermeable. तो इसको impermeable बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें bitumen laid out कर सकते हैं. So you can also lay out a bitumen in these joints also, because bitumen will be compressible. So whenever it will be lead to a temperature heat, summer season में bitumen आपकी easily melt हो सकती है. So summer season में आपका जो concrete है वो expand होना start होगा. So that expansion can be tolerated by these joints also. So now similarly, so like I already told, there are various layers which need to be present in a flexible and a rigid. So similarly, this is a cross section, another cross section of a rigid and a flexible pavement. So flexible and rigid have a both similar quality as a subgrade. So subgrade has to be there. So this subgrade has to be tested before the further layer are laid on it. तो इसकी टेस्टिंग आपकी रहेगी, CBR टेस्ट आपको करना पड़ेगा सॉइल का, so that you will be deciding what kind of thickness you will be getting out and what kind of layers which you will be laying out on the top of it. So then we have a sub base in a flexible pavement. So sub base can be present or cannot be present in a rigid pavement. Base course is present in a flexible pavement, but base course is emitted in a rigid pavement load, because concrete जो है उसकी जो flexure strength है वो काफी ज़्यादा high रहती है. So it does not need any base course on it. Then the last surface is the surface course, whereas rigid pavement में कोई भी surface course नहीं होता. वही जो course आपने concrete का lay down किया, that has to be smoothened up and it can be used as a surface also. Then in a flexible pavement, so it is a simple terms. Flexible pavement can be defined as a pavement layer comprising of a mixture of aggregate and a bitumen. So similarly, एक simple terms में अगर आप flexible pavement को define करना चाहते हो, so that will be mixture of a aggregate, the layer consisting of a pavement consisting of a mixture of aggregate and bitumen, heated and mixed properly, and then laid and compacted on a bed of a granular layer. So that is a kind of simpler definition of a flexible pavement. So aggregate mixed with the bitumen. Bitumen is kind of heated and mixed with the properly aggregate जो भी आप use कर रहे हो, ठीक है? So they are tested, all the material is tested before it is used. Test करने के बाद you are mixing aggregate with your bitumen, melted bitumen basically, ठीक है? Then laying out on a road surface and then compacted out. So that makes a flexible pavement. So these pavements will transmit wheel load chassis to the lower layers by grain to grain transfers through the points of contact in the granular structure. So like इनका जो granular transfer रहता है, जो load transfer जो categories है, that is defining by the grain to grain transfer रहता है. Means if wheel load is coming at एक single grain के ऊपर अगर आपका wheel load आ रहा है, so that single grain के contact में जितने भी आपके aggregate particle रहेंगे, so those will be taking out that load also. After similarly, that whole load is diverting out at a depth wise by the grain to grain structure. तो grain to grain structure आपके जो load है वो equally distribute होगा हर एक point पे ऊपर. तो at last में आपके subgrade तक पहुंचने का आपके जो सारा surface है वो equally जो सारी stresses हैं वो equally distribute हो जाएंगे. So this is an kind of advantage of a flexible movement. It is grain to grain structure जो आपकी flexible movement चल रही है.
So these are the various layers of a flexible pavement which है. The thickness may vary from depending on the subgrade के ऊपर, ठीक है. So compacted subgrade that could be आपका fly ash वगैरह, आप कोई भी compacted surface डाल के, ठीक है, treatment डाल के आप उसको subgrade को compact कर सकते हो. Sub base आ सकता है उसके ऊपर. Then base coats, binder coats, surface coat and seal coat. So these are the various layers which need to be present in a flexible pavement. तो ये सारी layers आपकी flexible pavement में रहती. तो prime coat and tack coat भी आपके रहते हैं basically, that will be discussed in the further videos. Rigid pavement says so that flexible pavement is containing a bitumen as its binder, but in the rigid pavement the binder which is used for making this rigid pavement is a cement. So cement is basically used, so that is kind of main difference between these two pavements. So rigid pavements have sufficiently flexure strength to transmit the wheel load stresses to a wider area below. तो आपकी जो rigid pavement है उसके पास एक flexure strength अच्छी है, काफी better sufficient flexure strength है to transmit the wheel load to the stresses below the subgrade. तो सबग्रेड तक पहुंचने के लिए स्ट्रेसेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो आपकी जो कंक्रीट और जो आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रेसेस जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सॉइल सबग्रेड. देन कंपेयर्ड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट, rigid pavements are placed eitherly directly on the prepared subgrade or on a single layer of granular or stabilized material. Like I said, if your subgrade is kind of a good quality, if the severe value is quite high, okay, so then you can simply lay it out your concrete on your subgrade only. You don't need to lay down any base course or a sub base course above the subgrade layer. You can simply lay down your concrete layer on a subgrade also if you're if it is a very good quality or a stabilized material. So since there is only one layer of material between the concrete and subgrade, this layer can be called as a base or sub base course. तो like I said, अगर आप कोई भी लेयर आप डाल रहे हो सबग्रेड के ऊपर तो इसमें कोई बेस कोर्स नहीं है, कोई और अदर लेयर प्रेजेंट नहीं रहती है, तो सिंपली आप इस लेयर को जो आप ये एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो सबग्रेड के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा लेयर डाल रहे हो, नॉट ऑफ अ कंक्रीट बट एनी काइंड ऑफ अदर मटेरियल लाइक आपका कोई भी एग्रेड का, ग्रेवल्स का, तो उसको हम बेस कोर्स भी बोल सकते हैं और सब बेस कोर्स भी बोल सकते हैं. इट इज अप टू अस. So these pavements are named so because of the high flexure rigidity of the concrete slab, and hence the pavement structure deflects very little under loading due to high tolerance of elasticity of their surface curves. So that's why you might have seen it because आपके जो portals और आपके concrete road में बहुत कम develop होते हैं. That is due to because आपकी जो concrete road है वो एक single unit में act करती है. Not as compared to flexible pavement. Flexible pavement is जहाँ उसके ऊपर ग्रेन के ऊपर लोड आए उसी ग्रेन के नीचे कांटेक्ट में जो सरफेस रहेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे, सो दोस विल बी टेकिंग आउट लोड ओनली. और जहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगी वहां पे आपका जो पोर्टल्स डेवलप होना स्टार्ट होता है. बट इन अ केस ऑफ अ रिजिड पेमेंट the whole pavement, the whole layer is acting as an integral part and the whole load is traveling as a uniformly distributed. So that's how a rigid pavement looks like. So that these roads are basically reinforcement roads. So like if you see here, so that is after the subgrade they lay down another course of it that we can also call it as a base course or a base course, sub base course. But in the first image, if you see that that layer